Good morning, students. I am Leena Edu. Today we are going to learn about country and state. India is a large country. It has many states and is surrounded by several other countries. In this lesson, we shall learn about our country and its state. Firstly, we have to understand what is country. A country is a distinct territorial body or political entity. Means ऐसा क्षेत्र जिसकी भौगोलिक स्थिति हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल एंटिटी जिसकी राजनीतिक पहचान हो. It is often referred to as the land of an individual's birth, residence और citizenship. ऐसा क्षेत्र जिसकी भौगोलिक स्थिति हो, जिसकी राजनीतिक पहचान हो, जहाँ लोग रहते हो, जहाँ पीपल सरवाइव करते हो, वहाँ के निवासी हो. सिटीजनशिप मीन्स वहाँ के वो नागरिक हो. वह क्षेत्र आपका कंट्री कहलाता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एंड स्टेट. The main difference between country and state is that the term country refers to a large nation with its own government and economy, whereas the term state refers to a large governing area within the country. It means country वह large nation है और उसकी खुद की सरकार होती है. ओन गवर्नमेंट मतलब उसकी सरकार होती है. एंड इकोनॉमी मतलब उसकी अर्थव्यवस्था होती है. वेयरएज द टर्म स्टेट रेफर्स टू अ लार्ज गवर्निंग एरिया. स्टेट की भी खुद की सरकार होती है, खुद की गवर्निंग होती है, बट वो कंट्री का एक पार्ट होता है, इकाई होती है, एक यूनिट होता है. सो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग एंड इट्स ओन करेंसी. Look at this picture, student. This is picture of Indian flag and this is picture of Indonesia flag and this is picture of Bangladesh flag. Okay, every country has its own currency. Like rupee is the currency of India and rupiah is the currency of Indonesia. Moving on, we are going to learn about states of India. India is a large country. It is divided into smaller state. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं. India has a total of 28 states and 8 union territories. Understand? Look at this map. This is map of India. आप यहाँ पर कलरफुल एरिया देख रहे हैं. ये सभी इंडियन स्टेट हैं. We have 28 स्टेट. ओके स्टूडेंट. कलरफुल इसलिए रखा गया है ताकि हम आसानी से इनकी बाउंड्रीज को पहचान सकें. ओके. फर्स्टली दिस इज एरिया, दिस इज स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा. दिस इज राजस्थान एंड दिस इज गुजरात. उत्तर प्रदेश, दिस इज द एरिया ऑफ बिहार, दिस इज सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय. And this is West Bengal. This is Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, and this is Andhra Pradesh. Here, this is Karnataka and this is Goa. Here, this is Tamil Nadu and this is
Kerala. So student, this is 28 states of India. Now, moving on, India has 8 union territories. There are some regions in India which are called union territories. इंडिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको यूनियन टेरिटरीज, हिंदी में से केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स दिस रीजन्स. ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसपे ओवरऑल कंट्रोल, जो शासन होता है वो केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. Look at this map, student. This is Indian map showing union territories. Okay, Delhi is the capital of India, and this is also union territories. Chandigarh, Jammu and Kashmir, Dadar, Nagar Haveli and Daman Diu, Lakshadweep, Andaman Nicobar, and Ladakh, and at last we have Puducherry. So student, these are the union territories of India. Okay student, we saw maps of states and union territories. Let's see this map. This map shows neighboring country of India. Look at this string. This is China and this is Pakistan. Between Pakistan and China there is small region. This is Afghanistan. इसने बहुत ही कम क्षेत्रों में इंडिया के बॉर्डर को टच किया है. Here, this is another country, Nepal, and this is Bhutan. All these countries in the north and northeast, and this is Bangladesh and this is Myanmar in the east. India also share water borders with Sri Lanka and Maldives. So, in total, India has 9 neighbor countries. In this lesson, we learn about India and its neighboring countries. India has many states. We learned the name of these different states from the maps. So, student, read your lessons and write the names of the state and union territories on the maps. Okay, student, thank you.